Assalamu alaikum students. Today we are going to solve our questions regarding the double entry bookkeeping system. So illustration number 1, state the type of two accounts involved in the following transactions. Okay, so first we find out the two account involvement. Why? Because it's a double entry system, and in this system each and every transaction having its dual effects. Number 1, commence business with cash रुपीज़ 70,000. बिजनेस कैश में स्टार्ट किया गया 70,000 रुपये से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में क्या आया? कैश आया, राइट. और कैश किसने दिया? ओनर ऑफ द बिजनेस. एंड वेयर द ओनर ऑफ द बिजनेस इंट्रोड्यूस हिज ओन मनी इनटू द बिजनेस कॉल्ड कैपिटल. सो द टू अकाउंट्स आर कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. सेकेंड, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया रुपीज़ 10,000. सो फर्स्ट, who is the receiver? Bank of India receiver. So there are two accounts, Bank of India account and cash account. Number 3, cash withdraw from Bank of India for office use rupees 5,500. बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकाला गया. हमारे पास क्या आया? कैश आया. और कहाँ से निकाला गया? बैंक ऑफ इंडिया से. सो कैश अकाउंट एंड बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 5,000. सामान खरीदा गया कैश में 5,000 रुपीज़ में. हमारे पास क्या आया? परचेज आया. हमारे पास से क्या चला गया? कैश. सो अगेन टू अकाउंट, परचेज एंड कैश. नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स रुपीज़ 6,000. मीन्स हमने सामान खरीदे उधारी में किरण स्टोर से. सो व्हाट वी रिसीव्ड? परचेसेस. और हु इज़ द गिवर? किरण स्टोर. सो अगेन टू अकाउंट्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड किरण स्टोर्स अकाउंट. 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 3,000. हमने सामान कैश में सेल किए 3,000 रुपये से. सो व्हाट वी अर्न? कैश. और हमको कैश कब मिला? जब हमने सेल किए. अगेन टू अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सेल अकाउंट. 7, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी रुपीज़ 9,000. रोहिणी को हमने सामान बेचे. हु इज़ द रिसीवर? रोहिणी. एंड व्हाट वी डू? हमने क्या किए? हमने सामान बेचे, सेल किए. सो रोहिणी अकाउंट एंड सेल अकाउंट. 8, रिसीव डिविडेंड रुपीज़ 4,500. हमको डिविडेंड मिला, राइट. 4,500 डिविडेंड हमको क्या में मिला? कैश में मिला. सो कैश अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट. एंड लास्ट, पेड ऑडिट फीस रुपीज़ 1,000. ओके, सो व्हाट वी पेड? ऑडिट फीस एंड पेड इन कैश. सो audit fees account and cash account. Clear है? Through this we can find the two involvement of the account into the one transactions. इस तरह से हम देखेंगे एक ट्रांजेक्शन्स में किस तरह से दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर है? नाउ मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड क्वेश्चन. Illustration number 2, classify the following accounts into personal, real and nominal account. अब देखो यहाँ पे जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं, हम उन सारे आइटम्स को एज पर देयर अकाउंट हमको उसको क्लासीफाई करना है. नंबर 1, स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर एक्सेट्रा विच इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पस, राइट. बट हम स्टेशनरी खरीदते तो हमारे पास क्या जाता है? पैसा चला जाता है. So stationery is our expenses come to nominal account. Next one, machinery. Machinery is our fixed assets having more than 4 years of value, right. ये हमारा assets है. For all assets we have prepare real account, so machinery goes to real account. Next, loss by fire. It's our loss, right. Why? Because आग से हमारा सामान जल गया, ख़राब हो गया. It's our loss transfer to nominal account, because nominal account formula is debit all expenses and losses, credit all income and gain. Next, building. Again, building is our fixed assets having a value of more than 4 years
and for recording assets we prepare real account. So building goes to real account. Next, copyright. Copyright is our registered trademark, okay, and registered trademark also considered as our assets. So copyright transfer to real account. Then laptop again, it's our personal property, it's our personal assets, so transfer to a real account. Next one is Mahesh account. Mahesh is considered the natural human being, and for recording natural human being and for recording natural plus artificial human being we prepare personal account. So Mahesh account transfer to personal account. Next one, capital account. Again, the capital account related to natural human being transfer to personal account. Next, Pune Municipal Corporation account called as artificial human being. So again transfer to personal account. Next, Bank of Maharashtra account. Again artificial human being transfer to personal account. Next, repairs. Repairs is our expenses transfer to nominal account. Wages. Wages means an amount paid to labor. जो लेबर हमारे पास काम करते हैं उनको दिया जाने वाला अमाउंट. Wages is also an expenses transfer to nominal account. Clear students? Clear students? Through this we can classify the account into personal, real and nominal. Now move forward to the next question. Illustration number 3. Classify the following accounts under personal, real and nominal account. Again we have to classify the following account. Number 1, cash account goes to real account. Why? It's an assets. Furniture, again assets, real account. Prepaid insurance. Prepaid insurance means it relates to the personal account. It relates to the artificial, either natural human being, so comes to personal account. Next one, loan again target to the personal account. Next, outstanding salary, again related to the human being, so personal account. Life insurance corporation, again relating to the natural human being plus artificial human being, so personal account. Next, trademark is our assets, real account. Drawing related to personal account. Drawing means withdraw for personal use. Owner withdraw for personal use called drawing, again personal account. Next, Rohit account, again personal account. Goodwill account. Goodwill is our assets, transfer to real account. Then commission account. Commission is our expenses, either commission is our income. अगर हमने कमीशन दिए हैं तो एक्सपेंसेस है, अगर हमें कमीशन मिला है तो हमारी इनकम है, ट्रांसफर टू नॉमिनल अकाउंट. एंड लास्ट, इंटरेस्ट. अगेन इफ इंटरेस्ट इज पेबल so it's our expenses, if interest is receivable so it's our income, so transfer to nominal account. Clear students? Move forward to the next question. Illustration number 4. Classify the following accounts under assets, liabilities, income and expenditure. Listen, अभी तक हमने क्या किया था? Classify the accounts into personal, real and nominal. अभी हम क्या करेंगे? As per the assets, liability, income and expenditure. Okay. Number 1, prepaid rent. Prepaid rent means rent paid in advance. मतलब आने वाले टाइम का, आने वाले साल का रेंट हमने पहले ही पे किए, जिसका हमको बेनिफिट कब होगा? आने वाले साल में होगा. So it's transferred to asset side. Next, salary is our expenses, so transfer to expenditure side. Next, bank loan is our borrowing, is our loan, ये हमारे पे कर्जा है, transfer to liability side. Next, motor car is our property, is our assets, transfer to asset side. Next, rent payable means rent हो गया, इसका इन अदर नेम वी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया बट अभी तक के हमने दिए नहीं, हमें आज नहीं तो कल देना है, हमारे ऊपर ये किसी की उधारी है, सो ट्रांसफ़र टू लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स इज आर एक्सपेंसेस आर लॉसेस, ट्रांसफ़र टू एक्सपेंडिचर साइड.
copyright is our property, transfer to asset side. Next one, interest received is our income, transfer to income side. Dividend received, again it's our income, transfer to income side. Premises is our assets, so transfer to asset side. Insurance premium is our expenses, transfer to expenditure side. And last, audit fees, again it's our expenses, so transfer to expenditure side. Clear? Through this we can classify the accounts under the heads of assets, liabilities, income and expenditure. Okay students, now move forward to the next question. Illustration number 5. Again, classify the following accounts into assets, liabilities, income and expenditure. Okay, so number 1, land and building is our assets, transfer to asset side. Interest received, our income, transfer to income side. Computer, again it's our assets. Sundry creditors means the person whom we purchase goods on credit. ऐसा आदमी, ऐसी पार्टी जिससे हम सामान उधारी में लेते हैं, मीन्स हमें आज नहीं तो कल पैसे देना है, ये हमारी उधारी है, ट्रांसफ़र टू लाइबिलिटी साइड. नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल असेट साइड. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंडिचर साइड. सन्ड्री डेटर्स असेट्स. गुडविल असेट्स. फ्रेट मतलब मालगाड़ी का किराया, जो रेल चलती है, रेल या ट्रक वगैरह होते हैं, उसका किराया कॉल्ड फ्रेट. ओके, सो फ्रेट बेसिकली यूज़ किया जाता है मालगाड़ी के लिए. जो हम रेलवेज़ होती है, जो लोडिंग वाले रेलवेज़ होती है, उनके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड फ्रेट. ट्रांसफ़र टू एक्सपेंडिचर साइड. नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम. बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़. अमिट्स कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, it's our income, transfer to income side. Bank overdraft liabilities. Livestock are assets. Printing and stationery expenditure side. Cash at bank asset side. Rent received income. Repairs and maintenance expenditure side. Then carriage, again expenditure side. Outstanding rent, transfer to liability side. Commission received income side. Bank loan liability side. Electricity bill expenditure side. And copyright is our asset side. Through this we can transfer all the accounts. Okay students, so here all the classification of accounts through assets, liability and the personal, real and nominal account have been completed. Inshallah, from next lecture we are going to solve the equation regarding assets, liabilities and capital. Thank you. Assalamu alaikum.